भाइयों और बहनों, जंगल बचे नहीं, सरकार चेती नहीं और माफिया पेटी नहीं। हरियाणा में हरे भरे पेड़ों के दुश्मन खुलेआम सड़क बना रहे थे। अब सड़क किसके लिए थी? पत्थर ले जाने के लिए, वो भी ऐसी जगह जहां पत्ता हिलाने के लिए भी इजाज़त नहीं। लेकिन अब माफिया का खेल फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट के जाल में सीजीआई साहब ने जो फटकार लगाई है, सुनकर तो हरियाणा के सचिव साहब के होश उड़ गए। माफिया का जंगल प्रेम। अब सुनिए कहानी शुरू से। नूह जिले में अरावली के पहाड़ियों में खनन माफिया ने गजब का काम कर दिखाया। 6 किलोमीटर लंबी सड़क धड़ाधड़ बना डाली, वो भी बिना किसी इजाजत के। पेड़ हटा दिए, पहाड़ काट दिए। कानून, अरे भैया, माफिया के लिए तो कानून एक पन्ने का खिलौना है। अब ये सड़क क्यों बनी? ताकि बड़े बड़े पत्थर आराम से खनन करके ट्रकों में भरकर ले जाए जाएं। यानी अरावली को नोच नोच कर खाली कर दिया जाए। सीजीआई साहब का करारा सवाल। और ये जब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो सीजीआई साहब यानी जस्टिस BR गवई ने अपनी कड़क आवाज में कहा, ये क्या मजाक चल रहा है? माफिया ही सरकार चला रहे हैं क्या? मुख्य सचिव साहब ने मासूम बनकर कहा, हम क्या करें साहब, ये तो दूसरे अफसर कर रहे थे। तो कोर्ट ने कहा, हमें बेवकूफ़ मत समझिए, आप सब मिले हुए हैं। माफिया सिर्फ अपने बंदों को नहीं, अफसरों को भी बचा रहा है। अब सोचिए, कोर्ट में इस तरह की बात खुलेआम कह दी जाए तो सरकार की हालत क्या हुई होगी। कानून बना शोपीस। अब जरा कानून की किताब भी खोल लेते हैं। पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट PLPA, भारतीय वन अधिनियम दोनों बोलते हैं कि इन क्षेत्रों में बिना अनुमति कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इधर तो सड़क ही बन गई बिना रोक टोक के। मतलब सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी थी या जानबूझकर आके मूंदे बैठी थी? अब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। खेल में कौन कौन शामिल है? अब जनता पूछ रही है, ये खेल कैसे चलता है? साफ साफ कहे तो माफिया, पुलिस और लोकल प्रशासन मिलकर खेल खेल रहे हैं। पेड़ों की कटाई, सड़क निर्माण, अवैध खनन, सब कुछ हो रहा है और किसी की जबान तक नहीं खुलती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मामला सीरियस बता दिया है। 16 जुलाई तक बताओ कौन कौन दोषी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की। पर्यावरण की लूट। सोचिए, अरावली जैसी पहाड़ियां जो दिल्ली NCR की फेफड़े हैं, जल स्रोत हैं, बाढ़ रोकती हैं, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है सिर्फ पैसों के लालच में। पेड़ों की बलि, पहाड़ों की कटाई ताकि जेबी भर जाएं। अब इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? सरकार की बेशर्मी। अब बात करते हैं सरकार की। हरियाणा सरकार कहती है हम 0 टॉलरेंस पर हैं, लेकिन यहाँ तो 100% टॉलरेंस दिख रहा है। मुख्य सचिव साहब कोर्ट में जाकर बच्चों वाली कहानी सुना रहे थे। साहब, हम क्या करें, ये तो नीचे के अफसर कह रहे हैं। अब CGI ने साहब बोल दिया, फालतू सफाई मत दीजिए, माफिया के साथ जो जुड़ाव है उस पर एक्शन लीजिए, नहीं तो अगली बार आपका ही नंबर आएगा। न्यायपालिका का बड़ा संदेश। इस पूरे केस में सबसे बड़ी बात है न्यायपालिका का ये सख्त संदेश। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पर्यावरणीय अपराधों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। अगर माफिया के साथ मिलकर पेड़ों की कटाई की गई तो कोर्ट खुद आगे आएगा। आगे क्या होगा, अब देखना है कि 16 जुलाई को क्या होता है। हरियाणा सरकार को कोर्ट में पूरा ब्यौरा देना है, कौन दोषी है, क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या होगा। अगर सरकार ने फिर बहानेबाजी की तो सुप्रीम कोर्ट का अगला एक्शन और बड़ा होगा। जनता का रोल। एक बात हमें भी समझनी चाहिए, अगर स्थानीय नागरिक और पर्यावरण कार्यकर्ता आवाज ना उठाते तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता। तो भाइयों और बहनों, जब भी आपके आसपास इस तरह के अपराध होते दिखे, चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए, शिकायत करिए, वरना माफिया और अफसर मिलकर हरियाली को बर्बाद कर देंगे और हमें रहने को गर्म रेत और धूल मिलेगी। अब डर गया माफिया। तो दोस्तों, फिलहाल माफिया डर गया है, सरकार भी हड़बड़ा गई है और CGI साहब की चेतावनी गूंज रही है। हरियाणा सरकार, माफिया से मिलकर खेल बंद करो वरना भुगतना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई में सरकार क्या जवाब देती है, कार्यवाही होती है या फिर एक और चालाकी की कोशिश। अटॉर्नी जनरल India, R.A. Raman, the learned Solicitor General Tushar Mehta, Kapil Sibal, the President of the SCBA, Rachna Srivastava, the Vice President of SCBA, the law officers, the senior advocates, the family members of Vela Trivedi, a very dear friend and former Chief Justice of
Gujarat High Court, Justice Sonia Gokani, and members of the bar. Today we come together to bid farewell to our colleague, Honorable Justice Bela M. Trivedi. The journey of Justice Trivedi to this court is indeed a compelling story. Her upbringing in Gujarat was marked by a variety of experiences due to her father's career in the judiciary, which involved frequent transfers. In a job that requires relocation, while there are challenges in settling down, it also offers exposure to the cultures of various cities and towns. I am certain these experiences would have broadened Justice Trivedi's understanding of the diverse challenges people face. Inspired by her father, Justice Trivedi pursued a career in law and practiced for nearly a decade on the civil and constitutional side, the Gujarat High Court. She then applied for high judicial service. A significant chapter in her judicial life commenced with her appointment to the City Civil and Sessions Court in Ahmedabad in 1995. It has a way of writing beautiful stories, and in Justice Trivedi's life, he wrote one such tale where she walked the same courtroom corridors as her father, both serving as judges at the City Civil and Sessions Court at Ahmedabad at the same time. This rare distinction was recognized by the Limca Book of Records, which recorded the entry in their 1996 edition as Raikot, father-daughter judges in the same court. Justice Trivedi's extensive experience in the district judiciary gave her expertise in civil and criminal law as well as procedural law. As a member of the district judiciary, Justice Trivedi held several important roles. On the judicial side, he served as a CBI judge and as a special judge in several cases. Her judicial work was complemented by significant administrative responsibility, including her tenure as Registrar of Vigilance in the Gujarat High Court and as Law Secretary to the Government of Gujarat. In each of these roles, she displayed outstanding legal insight and administrative acumen. These responsibilities demanded a different set of competencies than those required on the judicial side. While adjudication calls for analytical rigor, neutrality, and legal interpretation, administrative roles require strategic planning, policy making, insight, institutional management, and the ability to coordinate across departments, stakeholders. As Registrar of Vigilance at the Gujarat High Court, she was interested with maintaining the integrity of the judicial system, handling sensitive issues with discretion, fairness, and firmness. Her tenure as a law secretary further demonstrated her capacity to engage with complex legal frameworks at the intersection of government and policy. As law secretary, she was instrumental in the establishment of the Gujarat National Law University. Justice Trivedi was elevated to the Gujarat High Court in 2011 and later to the Supreme Court in August 2021. Her elevation to this court is remarkable, as she is presently the only judge in the Supreme Court who rose to the ranks of the district judiciary. This rare journey from the grassroots levels of the judicial system to the apex court serves as an inspiration for many in the district judiciary. Her appointment brought a distinct perspective to the bench. As a judge of the Supreme Court of India, Justice Trivedi has dealt with a wide range of cases, spanning from criminal matters to those heard by constitutional benches. I had the opportunity to share the bench with her during the proceedings of the 7-judge bench, hearing on a significant constitutional question of whether subclassification among scheduled castes is permissible under the Constitution. Justice Trivedi authored the sole dissenting opinion in the case, a reflection of her independence of thought and her ability to express her views without hesitation. As a Supreme Court judge, Justice Trivedi, who served as a visitor to the Gujarat National Law University, an institution she had previously played a key role in establishing. In this capacity, she provided guidance to both faculty and students alike. Justice Trivedi is hardworking, with a keen eye for detail and a commitment to her thoroughly preparing for each case she presides over. On a personal note, when her name was doing rounds to me,
from the January of 2021. I had an occasion to talk to her on several occasions, and then after elevation, I found an elder sister in her. So she only elder to me by a couple of months, but she was always a beloved to me. And Ms. Matthews has mentioned about the next week's working. I have been blamed by her for that also. Because since I was to take over, the calendar was finalized by me. And I had received requests from many of the members that the beginning of July is not a right season for the Supreme Court to open up. And therefore, we decided to postpone the vacation by a week and also opening by a week. But by now, on the basis of the practice which has been prevailing for last several years, they had already booked the tickets to go for attending a marriage in the family in the US. And I had to consider not to cancel our bookings. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।